ठीक है, we'll continue with mainly chapter number 2 in this lecture. First lecture was all about the state of economy. So economic survey of 2022-23. Mark chapter number 2. There are 12 chapter in fact. This chapter number 2 is basically not more useful for the factual point of view, but concept के लिए काफ़ी better है. And for writing any descriptive answer के लिए, because it has basically explained the reform process for the 90s period also, earlier also, what happened during the 2000, then the last decade as well. So any answer when you are explaining in terms of the descriptive question that what were the economic reform during the 90s or prior to that, तो ये एक्चुअल में पूरा जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ रिकॉर्ड है, उसको डेटा वाइज तो एक्सप्लेन नहीं करे कि ग्रोथ के टर्म में, बट इट इज़ बेसिकली एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच वाइज. सो व्हाट वर द रिफॉर्म ड्यूरिंग द 1990s, during the period of 1998 to 2002, then 2003-4 to 2008-9, and then 2014 onwards. So you can say we can interpret, suppose the question refers to any economic reform done in the last decade. तो मान लो इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, तो लास्ट डेकेड का मतलब हो गया ऑलमोस्ट, अब आप 23 में हो तो 23-24 मतलब 2013-14 ऑनवर्ड्स का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो एक्सप्लेन करना है. सो द चैप्टर इज बेसिकली a short chapter but very useful from answer writing point of view. So just make a heading of India's medium term growth outlook with optimism and hope. Chapter number 2 heading is this: India's medium term growth outlook. India's medium term growth outlook. Medium term growth outlook. Just recall that when we explain the growth record, so medium term strategy को basically explain कर रहा है. It is basically explaining the India's medium term growth outlook. When we explain the overall path of growth in the sense, if you start from let us say 1950s, so that survey is not basically dealing with that part. So 50s to 1980s we witnessed a low rate of growth. So economy was basically progressing at an average rate of around 3 to 3.5% annual growth rate, mainly determined by the agriculture growth rate. In 1980 there was an increase in the growth rate, or per capita growth rate in fact almost doubled, and that was mainly because of pro business policy. So that pro business policy promoted growth in the 1980s. So that was the first U-turn, first growth trajectory change. Then 1991 onwards there was further growth momentum because of that economic reform. So the economic reform of 1991 onwards, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली 90s onwards का डिस्क्रिप्शन है, नॉट बिफोर दैट. तो इफ जब आप कंटेंट में जैसे पोस्ट रिफॉर्म आप डिस्कस कर रहे हो, तो पोस्ट रिफॉर्म का जो पीरियड है 91 onwards, फॉर दैट पर्पस दिस चैप्टर इज वेरी यूजफुल. देन दिस ग्रोथ मोमेंटम वाज लॉस्ट. द ग्रोथ मोमेंटम वाज रिटेन्ड अराउंड 5-6 year, so around 1997-98 that growth momentum was lost. That means the growth record further flattened, and it was there till 2003-4. After 2003-4 again we find a further higher growth. So what was the basically the reason for different we can say notes, जो अलग अलग डॉट्स यहाँ मार्क कर रहे हैं. तो 91 के बाद का जो रिफॉर्म है वो ब्रीफली एक्सप्लेन हो रहा है, नॉट इन डिटेल बट बेटर वर्ड्स है, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो. 98 to 2002
2002-3 के पीरियड को एक्सप्लेन किया गया कि वाई देयर वाज लो ग्रोथ रेट डिस्पाइट सर्टेन रिफॉर्म, और 2003-4 further onwards there was a high growth rate because globally also there was a better outlook. But it has basically explained 98 to 2002 period detail, because obviously अगर आप उसको political form से देखो तो वो NDA 1, so first government NDA 1 that was 98 to 2003-4, ठीक है. तो that period was there. तो उस पीरियड के जो आउटकम थे, उस पीरियड के आउटकम को करंट एनडीए के आउटकम से रिलेट किया जा रहा है. तो दैट चैप्टर इज बेसिकली रेफरिंग टू दैट पार्ट ऑल्सो. एक स्पेसिफिक कॉलम है जहाँ पे वो उस पीरियड को बेसिकली कंपेयर किया गया. दिस 98 to 2002, a parallel between two periods, 98 to 2002 and 2014 onwards. So basically it is making comparison of NDA 1 with the NDA 2 and NDA 3 we can say. तो वो पार्ट बेसिकली यहाँ पे रेफर करने के लिए, बट ग्रोथ स्टोरी बेसिकली आप ये रिकॉर्ड रखो. वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर प्रायर टू 91 व्हाट हैपेंड, वी आर मेनली डिस्कसिंग व्हाट इज हैपनिंग सिंस 1991. मेनली जो इलाबोरेशन होगा वो 2014 ऑनवर्ड्स के बेसिकली डिस्क्रिप्शन है. So we can start with the first paragraph here. ठीक है, मैं ओवरऑल एक बार स्ट्रक्चर यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ जो फॉर्म से बेसिकली आपको ये चैप्टर प्रोसीड करना है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट इंट्रोडक्शन, इट इज़ मेनली डीलिंग विद द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म इन 1991, प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म. तो 1991 में जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस थे, उस इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए व्हाट वर द रिफॉर्म्स टेकन और इनिशिएटेड इन 1991 ऑनवर्ड्स. एज यू नो, रिफॉर्म बेसिकली इट वाज अ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म in the area of industrial reform, then fiscal sector reform, then financial sector and the external reform. Within industrial reform, public sector role was diluted, industrial licensing was abolished, MRTP limit was scrapped and foreign investment was allowed. That means majority stake could be taken by the foreign firms. So that was a major reform regarding the industrial reform. Related to the financial sector reform, mainly the banking reform, based upon the recommendation of the Narasimhan Committee 1, then Narasimhan Committee 2, वो आपने अलग अलग फॉर्म में कर रखा है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और उनके पास ज़्यादा लिक्विड एसेट हो, फॉर दैट पर्पज ग्रेजुअली CRR वाज रिड्यूस्ड, SLR वाज रिड्यूस्ड. जो कंट्रोल थे बैंक के ऊपर, वो कंट्रोल लाइक एडमिनिस्ट्रेड इंटरेस्ट रेट होता था, वो डीरेगुलेट हुआ. तो बैंकिंग जो रिफॉर्म है वो भी दैट वाज अनदर पार्ट. देन द मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट पार्ट वाज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर. तो देयर वाज ब्रॉडली डिफरेंट एरियाज इन विच रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड इन 1991. इट इज जस्ट समिंग अप दोज रिफॉर्म वेरी वेल इन फ्यू पैराग्राफ्स. बट अगर इस तरीके के पैराग्राफ भी आपको अगर मतलब एक दो बार अगर आपने लिख लिया है एंड यू आर एबल टू रीप्रोड्यूस इट इन द पेपर, तो अगर आप इस तरीके के शॉर्ट पैराग्राफ को यूज़ करें तो ये अराउंड मोर देन 100 वर्ड्स और 150 वर्ड्स इनफैक्ट है. आपको ये कंप्लीट भी नहीं करना, हार्डली इनिशियल 2-3 सेंटेंस भी अगर आप रीप्रोड्यूस कर पाओ किसी को आंसर के अंदर, तो आपके आंसर का आउटलुक डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, तो विथ दैट पर्पस बेसिकली we are referring to this chapter. So this is not dealing with, as you know, more and more fact. It is basically dealing with more and more approach and the policy correction. So first will be the product and capital market reform initiated in the 1991. उसके continuity 98 वाले period के अंदर है. 90s वाले period में it was basically a continuity of that reform. Then it will be basically explaining that reform जो 98 onwards वाले reform है. तो NDA 1 वाले पीरियड के अंदर जो रिफॉर्म है, जो लाइक फॉर एग्जांपल FRBMA ऑफ 2003 या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए गोल्डन क्वालिटेटर प्रोजेक्ट, तो वैसे प्रोजेक्ट को बेसिकली हाईलाइट किया गया है फॉर दैट इन दिस सेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म विथ अ रिन्यूड इम्पेटस. एंड देन इट बेसिकली फोकसेस ऑन इंडियाज पार्टनरशिप इन द ग्लोबल बूम 2003-8 वाला जो पीरियड है, जो
हाई ग्रोथ रेट का फेज़ है. तो हाई ग्रोथ रेट का फेज़ है, दैट वाज द इंडियन इकोनॉमी ग्रो एट अ रेट ऑफ 8% ऑन एन एवरेज, ऑल्सो रेफर्ड एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियाज ग्रोथ रेट, बिकॉज उतना हाई ग्रोथ रेट उस पीरियड तक कभी भी अटेन. बट अ शॉर्ट पैराग्राफ इज़ फॉर दैट पर्पस, देयर कुड बी अदर रीज़न, इलेबोरेशन ज़्यादा नहीं मिलेगा. पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि वो गोल्डन फेज़ था, बट गोल्डन फेज़ को बेसिकली एक्सप्लेन काफ़ी शॉर्ट पैराग्राफ में कर दिया गया. बाकी वाले फेज़ में थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेशन है. सो यू नो दैट, बट आपको बेसिकली जो कंटेंट है उस कंटेंट पे ध्यान देना है कि जो लिखा गया है अल्टीमेटली यू हैव टू बेसिकली रिप्रोड्यूस इट. तो बेटर वर्ड्स के लिए, और जो आर्गुमेंट है उसमें जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ है, मतलब जो मेजर्स लिए गए हैं उनको आपको हाईलाइट करना है. सो वो तो एक्चुअली वी आर बेसिकली डीलिंग विद द फैक्ट, तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गया कि व्हाट रिफॉर्म मेजर्स हैज बीन टेकन. देन रिफॉर्म्स इन द न्यू इंडिया, दिस हैज बीन इलेबोरेटेड. ठीक है, ये आपका इलेबोरेशन होगा. इसके अलग अलग डायमेंशन है जो इस पिक्चर से क्लियर होगा, और इसके जो जितनी भी डायमेंशन है इन सब का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन है. लाइक क्रिएटिंग पब्लिक गुड, तो क्रिएटिंग पब्लिक गुड विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल. तो क्रिएटिंग पब्लिक गुड विल बी एक्सप्लेन बेसिकली फॉर इन डिटेल इन दिस पार्ट. फिर अलग अलग डिफरेंट सब हेडिंग्स बेसिकली इसके अंदर लिए जा रहे हैं. इन सब का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा. स्ट्रक्चर बेसिकली यहाँ से आ जाएगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द ईज़ ऑफ लिविंग विल बी अचीव्ड थ्रू क्रिएटिंग पब्लिक गुड, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्राइवेट सेक्टर participation. But what measures has been taken to, we can say, create public good? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिसेंट बजट के अंदर भी देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट ज़्यादा है. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो ग्रोथ है, सब्सटेंशियल ग्रोथ है इन द लास्ट फ्यू ईयर, इट वाज मेनली इन ऑर्डर टू क्रिएट मोर एंड मोर कैपिटल गुड. सो हाउ दैट क्रिएशन ऑफ कैपिटल गुड विल प्रमोट ग्रोथ. Similarly, trust-based governance, like reforms in the area of GST, जो पब्लिक इंटरफेस होता था पहले टैक्स ऑफिशियल के साथ, वह पब्लिक इंटरफेस नहीं है, इट इज़ बेसिकली ऑनलाइन. सो बेसिकली इट इज़ हेल्पिंग टू क्रिएट दैट ट्रस्ट इन टू द सिस्टम, दैट हेल्प्स इन जनरेटिंग मोर एंड मोर revenue. So that point will be explained in various parts. So we can start with the 91 reform first. You can ignore this part. ठीक है, यहाँ से आप बिगिन कर लो, दैट विल बी बेटर. प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म. प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म 1991. इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म 1991. So you can use, remember, this paragraph or part of this paragraph whenever you are answering any question related to the reform of 1991. So the first line, the macroeconomic imbalance of late 1980s, macroeconomic imbalance of late 1980s and early 1990s pushed the government towards a structural reform of 1991. Pushed the government towards introducing the structural reform of 1991. Introducing the structural reform of 1991. So what was basically the macroeconomic imbalance of late 1980s? Late 1980s का macroeconomic imbalance. What was that macroeconomic imbalance? Macroeconomic imbalance was increase in the deficit. The current account deficit was rising. But why it was rising? Because 1980s में in fact reform तो 91 का है, but late 1980s was the period when import was liberalized. Import के ऊपर जो restriction थे वो काफ़ी liberal हो गए. तो with liberalized import what happened, that import started rising.
So as import started rising, it led to current account deficit. मतलब हमने इकोनॉमी को बेसिकली ओपनिंग अप पहले से भी हो रही है, 91 से पहले से भी है, बट इट वाज मेनली इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट लिबरलाइजेशन. एंड late 1980s was also the period of, particularly after 1989. 1989 to 1991 was the period of political crisis also, economic crisis also, domestically as well as internationally. There were some international factors like first Iraq war, USA, that led to the increase in price of oil, disintegration of USSR, which was a major trading partner of India, जिसके साथ ट्रेड रुपये और रूबल का होता था. तो जब डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर तो उससे इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट मार्केट था वो एक्सपोर्ट मार्केट अब नहीं रहा. सो दैट डिक्लाइन द एक्सपोर्ट. ऑन वन हैंड इंपोर्ट वाज राइजिंग बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट गल्फ वॉर, द प्राइस ऑफ ऑयल ऑल्सो स्टार्टेड राइजिंग. तो इम्पोर्ट का जो बिल है वो बढ़ रहा था, इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन भी हुआ और इम्पोर्ट का बिल फर्दर बढ़ रहा था. दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट का मार्केट था वो एक्सपोर्ट का मार्केट मेनली इट वाज यूएसएसआर. तो दैट एक्सपोर्ट मार्केट वाज नॉट देयर. सो द एक्सपोर्ट्स वर नॉट राइजिंग एट द सेम पेस बट इंपोर्ट्स वर राइजिंग. प्लस डोमेस्टिकली देयर वाज अ क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज इन द गवर्नमेंट. सो दैट वाज ऑल्सो द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. तो यू मस्ट नो दैट. आपको वो एक्सप्लेन नहीं करना कहीं पे, वर्ड सिर्फ एक ही है बिकॉज वहाँ पे वर्ड का लिमिटेशन है. तो आपने सिर्फ वहाँ मेंशन कर दिया कि मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस ऑफ लेट 1980s एंड अर्ली 1990s पुश द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इंट्रोड्यूसिंग द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑफ 1991. सो दैट स्टेटमेंट इज़ वेरी वेल. तो आपको वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है वहाँ, क्लियर. बट यू मस्ट नो दैट व्हाट वर दोज मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस. So the high combined deficit of central and state government, the high combined deficit of central and state government, elevated inflationary pressure, and large and unsustainable current account deficit, large and unsustainable CAD, led to balance of payment crisis, led to BOP crisis in the Indian economy, led to BOP crisis in the Indian economy, That means when you are talking about the macroeconomic imbalance, so imbalance was basically not only in terms of the huge current account deficit, it was also unstable in the sense there was built-in inflationary pressure, and there was inflationary pressure because of high fiscal deficit of central government and state government. तो ये पॉइंट बेसिकली जब आप इन्फ्लेशन डेफिसिट वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वेट, एक्सटर्नलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, you create a cost for other but you don't bear it. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए जो यहाँ पे जो पॉइंट बेसिकली आपने एक्सप्लेन किया वो मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंस के अंदर CAD का अमाउंट हायर है, इन्फ्लेशन वाज मोर एंड फिजिकल डेफिसिट वाज आल्सो वेरी high, and that led to balance of payment crisis of the Indian economy of 1991, and at that point of time the foreign exchange reserve was at its lowest level. It was not enough to even pay an import bill of a week, and because of that government of India has to place its gold into the UK bank and take the foreign exchange, and that was basically the period of crisis.
So in order to counter or overcome from that crisis, the structural reform was initiated. So उस context में structural reform को हम पढ़ते हैं basically. Continue करना. Next paragraph कर लो आप अपने लिए. In response to this situation, trade and investment were liberalized. Trade and investment were liberalized in 1991. In response to this situation, trade and investment were liberalized in 1991. Full stop. Import licensing on almost all product were abolished and the entry restriction for firms was simplified. Full stop. The new policy encouraged entry of new firms. The new policy encouraged entry of new private sector firms by ending the public sector monopoly. In many sectors and initiating the automatic approval policy for FDI up to 51%. तो इसने जितने फीचर है उसको बेसिकली सम अप कर लिया इन वन ऑफ योर सेंटेंस. पब्लिक सेक्टर रोल वाज डाइल्यूटेड, लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज. तो जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1991 के, उसके 4 फीचर थे. पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूशन, नंबर ऑफ सेक्टर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर यूज टू बी 17 or 18. दैट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर वाज डाइल्यूटेड. मतलब वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 17-18 to 8 एंड आफ्टर दैट प्रोग्रेसिवली फर्दर रिड्यूस्ड. प्लस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज़ बीन ऑलमोस्ट abolished. Foreign investment limit was extended to 51% and now in many industries we find 100% equity also. So those reforms were taken, plus it adds further the exchange rate was made flexible and allowed to depreciate as necessary. So 91 was also the period when subsequently 2 times rupee was devalued by the central bank. So 91 was because जो structural reform होता है उसमें याद रखिएगा बहुत सारे reform policies हैं. To come out of that crisis you cannot pick only one sector because problem was not only in one sector and all sectors are basically linked. So you have to anticipate if you will intervene in this sector, how the problem of this sector will spill over to the. तो you have to anticipate it. अगर आपने anticipate कर रखा और उसके accordingly policy design किया है, then that policy will work and it will be more effective. So it was also anticipated that the problem of one sector will spill over to the other sectors. So in all sector reform were initiated at the same point of time. Continue this. The exchange rate was made flexible. The exchange rate was made flexible and allowed to depreciate as necessary
to maintain competitiveness, to maintain competitiveness, to maintain competitiveness. बिकॉज जब करेंसी को हम डिवैल्यू या डेप्रिसिएट होता है तो उससे क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली चीपर हो जाएंगे. सो इंडियन गुड्स विल बिकम मोर कॉम्पिटिटिव आउटसाइड विथ दैट करेंसी डेप्रिसिएशन. द रूपी वॉज मेड फुल्ली कन्वर्टेबल. The rupee was made fully convertible. The rupee was made fully convertible on current account, on current account, and partially on capital account, and partially on capital account, partially on capital account. ठीक है. तो 92-93 was the period when liberalized exchange rate mechanism was introduced, and that terms, in that terms जो फॉरेन करेंसी आती थी उसमें से 60% और 40% एक रेट होता था जो मार्केट का रेट चल रहा होता था और एक रेट सेंट्रल बैंक का होता था. तो सेंट्रल बैंक का रेट हो गया वो ऑफिशियल रेट हो गया और दूसरा मार्केट रेट है. तो दैट पॉलिसी वाज, दैट मीन्स डुअल एक्सचेंज रेट वाज देयर. So if you get certain currency from the outside, you will convert that will convert that foreign currency into domestic currency at two different rates. Part of it will be converted at official rate, part will be converted at market rate. Then it was made convertible on the trade account. Then it was made convertible on the current account. So current account will include then goods, services, transfers and investment income. But as far as capital account is concerned, it was not convertible completely. और convertibility का मतलब, when you say that rupee has been made convertible on trade account or current account, it means what? You don't need to seek permission from the central bank to convert for those transaction. Remember जब कभी हम foreign exchange को convert करते हैं या रुपये से foreign exchange को अगर हम buy करते हैं, then RBI may ask you a question why you need that foreign exchange. But that question will not be asked for the current account transaction. That may be asked for the capital account transaction. So it was partially convertible on the capital account, not convertible, completely convertible on the current account. Next paragraph में. These reforms, current status भी वही है, capital account में convertibility और बढ़ गई है. तो capital account convertibility, as you know, according to the तारापोरे कमेटी, तो तारापोरे कमेटी 1, तारापोरे कमेटी 2 वो अपने कंटेंट के फॉर्म में कर रखा है. बट वो 91 का रिफॉर्म तो एक्चुअल में प्रोसेस है, वो इनिशिएट हुआ है. तो इनिशिएशन हुआ 91 में. तो पहले लर्म्स आया, फिर ट्रेड अकाउंट में कन्वर्टेबल हुआ, फिर करंट अकाउंट में कन्वर्टेबल हो गया. तो करंट अकाउंट कंप्लीट हो गया. अब कैपिटल अकाउंट के अंदर भी तो अलग अलग ट्रांजेक्शन है. तो पार्शली कहने का मतलब है फॉर सर्टेन ट्रांजेक्शन इट वॉज कन्वर्टेबल, फॉर सर्टेन अदर ट्रांजेक्शन नॉट कन्वर्टेबल. सब्सिक्वेंट बजट आएगा, उसके बाद के रिफॉर्म होंगे, उसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन में कन्वर्टेबल होते गए. तो इट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेबल, दैट वी कैन से दैट फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेबल, बट इट इज मेजरली कन्वर्टेबल नाउ इवन ऑन द कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट पे, दीज रिफॉर्म्स had a positive effect on the economy. These reforms had a positive effect on the economy. Had a positive effect on the economy. And the real growth, real growth means real GDP का growth. Real growth went up from an average of 5.5%, average of 5.5% during 1980s, 5.5% during 1980s to 6.3% from financial year 93 to financial year 2000. 6.3 from financial year 93 to financial year 2000. Financial year 93 to financial year 2000. 1980s का ग्रोथ 5.5,
रिफॉर्म के बाद का जो ग्रोथ है वो 6.3। ट्रेड लिबरलाइजेशन हैज अ विजिबल इफेक्ट trade liberalization has a visible effect on external trade. Trade liberalization has had a visible effect on external trade as total goods and service trade to GDP, increased from 17.2% in 1990 to 30.6% in 2000. 30.6% in 2000। ठीक है, ये एक्चुअल में टोटल ट्रेड है गुड्स और सर्विस का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. यू कैन कॉल इट एज नेट एक्सपोर्ट, सॉर्ट ऑफ नेट एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. सो द आउटकम वाज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ and the outcome was also in terms of the improvement in the current account balance and the trade also. जैसे इंडिया का शेयर अगर हम 91 में देखेंगे एक्सपोर्ट में कितना शेयर था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द शेयर वाज वेरी मिनिमल. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट शेयर हैज़ improved. So those improvement has happened because of the structural reform initiated in the 1991. तो इस फेज़ को बेसिकली जब आप एक्सप्लेन करते हैं 91 वाला जो पीरियड मतलब 90s का जो डेकेड है, उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म में मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आपको एरिया वाइज स्पेसिफाई करना था, बट काफ़ी वेल डिस्क्राइब्ड है ये शॉर्ट में. तो अगर आप कहीं भी किसी और सोर्स को पढ़ोगे तो काफ़ी डिटेल में होता है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है. आप जब आंसर लिख रहे हैं वर्ड्स का लिमिटेशन है, टाइम का लिमिटेशन है. तो दिस टाइप ऑफ पैराग्राफ और स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ कंबाइनिंग ऑल फैक्टर्स विदाउट मच इलेबोरेशन. इलेबोरेशन आपके माइंड में होना चाहिए कि वो इलेबोरेटेड कंसेप्ट ये होता है. जो आप लिख रहे हैं उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लिखा तो उसका मतलब क्या है, ट्रेड रिफॉर्म लिखा तो क्या मतलब हो गया, पब्लिक सेक्टर रोल डाइल्यूट किया तो उसका मतलब क्या था, without explaining that in detail. And now it moves from 90s to that period of 1998 onwards we can say. By the heading continuity in reform with a renewed impetus. Remember when we talk about that growth of 91 onwards, so 91 economic reform is said to be the first generation reform. The first generation reform in the sense you allowed foreign investment, trade licensing was abolished, public sector role was diluted, but that policy was needed in order to initiate the growth. We need a separate set of policy to सस्टेन इट. ग्रोथ को इनिशिएट करने के लिए अलग पॉलिसी चाहिए, सस्टेन करने के लिए अलग पॉलिसी चाहिए. तो जितने भी पॉलिसी रिफॉर्म 90s वाले पीरियड के अंदर थे उसमें मेनली वो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहलाए. सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म इन्वॉल्व होता है इन टर्म्स ऑफ द इनपुट रिफॉर्म. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, तो परमिशन तो मिल गया, यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, बट इफ फॉरेन फर्म्स विल कम इन टू इंडिया व्हाट दे विल रिक्वायर फर्स्ट, they will require first land. तो क्या लैंड रिफॉर्म हुए, लैंड लॉज को हमने रिफॉर्म किया. लैंड के बाद दे विल बी रिक्वायरिंग लेबर, तो वेदर लेबर लॉज वर लिबरलाइज्ड. आप अपॉइंट कर सकते हो बट उसको रिमूव नहीं कर सकते.
लैंड अगर बाय करेंगे तो देन यू हैव टू सीक वेरियस परमिशन फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स. सो लैंड रिफॉर्म्स, लेबर लॉज रिफॉर्म्स, दो वाज पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन रिफॉर्म. तो बेसिकली जब आप ये पार्ट एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें रिफॉर्म का नेचर बदल रहा है. तो इस सेक्शन में बेसिकली हम रिफॉर्म के डिफरेंट नेचर की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर डिफरेंट नेचर है, सेकंड पार्ट के अंदर नेचर डिफरेंट होगा. कंटिन्यू दिस. द प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, द प्रोडक्ट एंड कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, product and capital market reforms continued slowly over the decade of 1990s. Over the decade of 1990s. They got a renewed impetus. They got a renewed impetus or focus. They got a renewed impetus from the government, closer to the end of decade. Closer to the end of decade. So it is mainly referring to 90s, 98, 99, 2000. For some investment were liberalized further. Investment were liberalized further to encourage FDI. Investment were liberalized further to encourage FDI as main source of capital inflow. The telecom sector was entirely reformed. By new telecom policy 1991. Telecom policy of 1991. Telecom policy of 1991. 1999, not one. Telecom policy of 1999. It was opened for private sector. Participation. With a strong regulatory regime. Strong regulatory regime in the form of TRAI. That is Telecom Regulatory Authority of India. In the form of TRAI. So private sector participation was allowed. There was a new telecom policy of 1991. According to that policy, a telecom regulatory authority was set up and the private sector participation was allowed. Earlier the telecom was basically for the government sector. सो मोर प्राइवेट सेक्टर. दैट मीन्स दैट जो आप रेवोल्यूशन आज की डेट में देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, द क्रेडिट वी कैन से दैट द गोज टू 1999 टेलीकॉम पॉलिसी एंड द रेगुलेटर एज वेल. These reforms were cornerstone for IT sector boom in India. These reforms were cornerstone for IT sector boom in India, information and technology sector in India, and had a widespread spillover benefit to other sectors of economy. Widespread spillover benefit to other sectors of economy. That means if there will be reform in the telecommunication sector, the benefit of that telecommunication sector will spill over to
other sector. That means they will create, you can say, external economies for the other sectors. They will reduce their operating cost. ग्रोथ इस सेक्टर का होना है, बट इसका बेनिफिट अदर सेक्टर को रियलाइज करेंगे, उनके लिए कॉस्ट रिड्यूस होगा. सो इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग दैट बेनिफिट. सो वन इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन नोट द नेचर ऑफ द रिफॉर्म नाउ. नेचर ऑफ रिफॉर्म अब बेसिकली क्या हो रहा है, आप पहले ब्रॉडर रिफॉर्म हो गए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हो गया या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हो गए. अब यहाँ पे जो रिफॉर्म है वो इनपुट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा हो रहे हैं. तो इनपुट रिफॉर्म बेसिकली वाज द मेन पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन रिफॉर्म. इनपुट लाइक these are basically input. It helps in communication. So it is, but that through that help, it is basically helping the other sector as well. Then 98 onwards की जो पॉलिसी है उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विथ रिस्पेक्ट टू दी डिसइन्वेस्टमेंट. रिमेंबर 91 की जो पॉलिसी थी उसमें पब्लिक सेक्टर का रोल डाइल्यूट किया गया. रोल वाज डाइल्यूटेड, बट रोल डाइल्यूशन का मतलब जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आपने रिजर्व कर रखा था फॉर PSUs, वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज क्या कर दिए, कम कर दिए. मतलब उस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट कर सकता है, बट जो पब्लिक सेक्टर ऑलरेडी बिल्ट अप थे उनको हमने डिसइन्वेस्ट नहीं किया. हमने प्राइवेट सेक्टर को सिंपली क्या किया, यू कैन ऑल्सो ऑपरेट इन द सेम सेक्टर विदाउट सेलिंग दी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर. डिसइन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है उसमें क्या हो रहा है, जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स हैं उनको क्या करना है, सेल ऑफ करना है. उनको सेल ऑफ किया मतलब जिस एरिया में अब गवर्नमेंट का रोल नहीं है, आपने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया तो नाउ यू हैव टू गिव सम टाइम टू दैट सेक्टर. दे विल कम एंड मेक इन्वेस्टमेंट, दे विल क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर. देन इट इज़ टाइम फॉर गवर्नमेंट टू withdraw from that sector. Earlier you can understand it in this way. Earlier it was dominance of PSUs. Then PSU and private both will exist. That means you allowed private sector to enter. Now you are trying to withdraw from those areas and leaving that space only for the private sector. But what we have to do, हमने create कर रखा वो पब्लिक सेक्टर यूनिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो 1951 या 1956 की जो पॉलिसी है महालनोबिस मॉडल के अकॉर्डिंगली, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोर एंड मोर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, because that was not the time for attracting more private investment and private sector was not coming at all also. जहाँ सेक्टर अलाउड भी थे वहाँ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होते थे. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ PSU एक्सपेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So now if government is allowing private sector to come and they were coming in the private sector, then government has to withdraw itself. So government will withdraw only in the form of disinvestment. Close down करने का मतलब क्या है, या तो आप अपने इक्विटी को सेल ऑफ करोगे. इक्विटी को सेल ऑफ किया मतलब गवर्नमेंट अपने इक्विटी को प्राइवेट सेक्टर को क्या करे, सेल ऑफ करेगी. दैट विल बी द वे ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट. सो डिसइन्वेस्टमेंट पुश वाज बेसिकली डन इन दी दैट पीरियड. देयर वाज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, देन देयर वाज अ सेपरेट मिनिस्ट्री. फिर वो बाद में जाकर के मिनिस्ट्री फिर से कन्वर्ट हो गई, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ सेपरेट मिनिस्ट्री एज वेल. सो दैट पॉइंट हैज़ बीन एक्सप्लेन. ठीक है, मैं इन बिटवीन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट टू गिव दैट ओवरव्यू आउटलुक. अदरवाइज वो ज़्यादा कोर पॉइंट आ जाएगा, तो जो अंडरस्टैंडिंग होगी आपको अलग अलग पैराग्राफ में इसको डिवाइड करते जाओगे. सो यू हैव रिटन अप टू दिस ट्राई द पॉलिसी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट. दिस नेक्स्ट पैराग्राफ कर लेना आप. The policy on disinvestment and privatization. The policy on disinvestment and privatization. The policy on disinvestment and privatization also gathered steam during this period. The policy on disinvestment and privatization also gathered steam during this period. Full stop. The government set up a dedicated ministry. The government set up a dedicated ministry. That means there was a ministry of disinvestment. Government set up a dedicated ministry to take this agenda forward. To take this agenda forward.
full stop. It sold equity stakes in some central public sector enterprise. It sold equity stake in some CPSEs, central public sector enterprise, and privatized companies such as Maruti Udyog, Hindustan Zinc, Bharat Aluminium, BSNL, Maruti Udyog, Hindustan Zinc, Bharat Aluminium, BSNL, etc. ठीक है, तो रिफॉर्म बेसिकली आपने एक सेक्टर जो मार्क कर रखा है उसमें फर्दर रिफॉर्म के अंदर वन वाज इन द फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन and second is related to the disinvestment. Next, this period also marked the launch of the then largest infrastructure project of independent India in the form of Golden Quadrilateral project. So that Golden Quadrilateral project was basically connecting the north, south, east, west. So in that, but that Golden Quadrilateral project basically helped various other industries. In what way? Again ये दूसरा सेक्टर हो गया. अब with better connectivity or with better transportation, the firms will be realizing the external economies. टेलीकम्युनिकेशन से भी एक्सटर्नल इकॉनमीज है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर से भी, जिसे आप थ्योरी के फॉर्म में कहते हैं सोशल ओवरहेड कैपिटल क्रिएट किया गया. तो दे क्रिएट व्हाट? एक्सटर्नल इकॉनमीज विच विल बी अप्रोप्रिएटेड बाय द डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. तो दिस प्रोजेक्ट बेसिकली हेल्प टू क्रिएट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. कंटिन्यू दिस. द प्रोजेक्ट ब्रॉट significant economic benefit. The project brought significant economic benefit to country. The project brought significant economic benefit to country through enhanced connectivity, improved industrial activity, trade and economic growth. तो पॉइंट के अकॉर्डिंगली ये मैंने आपको थर्ड पॉइंट बोला है. एक टेलीकम्युनिकेशन के लिए हो गया, एक इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट, एंड फॉर द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. Alongside this, structural policies were formulated. Structural policies were formulated to address the macroeconomic imbalance. The Fiscal Responsibility Budget Management Act
The Fiscal Responsibility Budget Management Act, FRBMA, Fiscal Responsibility Budget Management Act was passed to address fiscal imbalance, was passed to address fiscal imbalance. ठीक है, उसके प्रोविज़न को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने FRBA में अलग कर रखा है उसके बाद, लेकिन काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन हो गए। वो एक्ट जब जिसको आप रेफ़र करें वो 2003 का है, तो 2003 के बाद फर्दर उसके अंदर चेंजेस हुए 2007-8 में, फिर 13-14 के अंदर NKC कमेटी के चेंजेस हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट रिफॉर्म, दैट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म was initiated in that period related to the fiscal imbalance. So government was trying to control its own expenditure. ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब हो गया कि जैसे आपने इसका प्रोविज़न बना लिया कि फिजिकल डेफिसिट कैन नॉट एक्सीड दिस लिमिट, सो दैट मीन्स गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग इट्स ओन एक्सपेंसेस। फिफ्थ, the banking system, the banking system which had accumulated bad debts, the banking system which had accumulated bad debts during the period of economic resurgence, the banking sector which had accumulated bad debts during the period of economic resurgence, after the 1991 reform, was supported through deregulation of interest rate, and the enactment of abbreviation ये लिखेगा SARFAESI, SARFAESI Act 2002. This basically stands for securitization, if you want to write full form, securitization and reconstruction of financial assets, and enforcement of Security Interest Act. I repeat, securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of Security Interest Act. So interest rate were deregulated and this act, interest rate were deregulated. नंबर ये जो पीरियड आप लिख रहे हो 98, 99, 2000 के बाद वाला फेज़, वो 91 में नरसिम्हन कमेटी 1 है और 98 में नरसिम्हन कमेटी 2 है। तो नरसिम्हन कमेटी 2 के जो रिकमेंडेशन है वो बेसिकली ये, मतलब जितने भी अब पॉलिसीज़ गवर्नमेंट फॉलो कर रही है वो it was initiated by that reform of 91, it continued in that phase. So you pushed for further reform because those reforms were not enough. They helped in initiating that growth, but you need more reform to sustain that growth. Interest rate were deregulated to promote competition among banks,
and provide more banking option to depositors. Provide more banking option to depositors. Provide more banking option to depositors. And strengthen monetary policy transmission. Provide more banking options to depositors. Banking option to depositors and strengthen monetary policy transmission. Monetary policy transmission. So this period was basically, you can sum up the 91 वाले फेज के लिए आपने ये एक्सप्लेन अलग अलग फॉर्म में कर लिया. 98 टू 2002-3 वाले का जो पीरियड है उसमें मेनली जो पॉइंट्स आ गए उसमें टेलीकॉम इज़ वन इन द फॉर्म ऑफ ट्राई टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 1999. देन सेकेंड वाज डिसइन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री. थर्ड वाज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल. Fourth was in terms of institutional reform like FRBMA, and fifth was in terms of banking sector. Next paragraph. However, the period of these reforms also witnessed a series of domestic and global shock. Series of domestic and global shock. Series of domestic and global shock which subdued investor confidence. Which subdued investor confidence. Subdued investor confidence. So one important shock, मतलब जो रिफॉर्म हुआ उसका ओवरऑल उतना आउटकम पॉजिटिव नहीं रहा. बिकॉज जब आप ग्रोथ रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं तो ग्रोथ रिकॉर्ड में हमने क्या देखा है, ग्रोथ रिकॉर्ड बेसिकली ये कह रहा है कि 91 के बाद जो फर्स्ट रिफॉर्म हुआ उसके बाद तो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी बढ़ी है, बट 97-98 ऑनवर्ड्स सेम मोमेंटम मेंटेन नहीं हुआ. सो देयर वाज अ लॉस इन मोमेंटम. पॉलिसी में क्या लिख रहे हैं हम, फर्स्ट रिफॉर्म वो फर्दर पुश हुआ बाय द सेकंड रिफॉर्म, बट उसका ग्रोथ के टर्म में आउटकम नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक एंड ग्लोबल शॉक लाइक द न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया that imposed various sanctions. So because of those sanctions the foreign capital was not coming. So those factors has been highlighted in this paragraph. Basically it says one-off shock overshadowed the reform of 98 and 2000. मतलब जो एक्सटर्नल और डोमेस्टिक शॉक थे उसने रिफॉर्म का जितना आउटकम होना चाहिए था उतना आउटकम जनरेट नहीं किया. सो द रीज़न यू आर मेंशनिंग दैट. The sanctions imposed by US on India, the sanctions imposed by US on India, the sanctions imposed by US on India after India's nuclear test, after India's nuclear test, after India's nuclear test led to sharp decline in led to sharp decline in capital flow to India, led to sharp decline in capital flow to India, capital flow to India. So the period between 2000 and 2002, the period between 2000 and 2002 also witnessed two successive drought. Also witnessed two successive drought. Two successive drought. These domestic shock were accompanied by. This domestic shock was accompanied by
was accompanied by global uncertainties, global uncertainties, global uncertainties resulting from the end of technological boom, technological boom and 9/11 crisis or 9/11 attack, technological boom and 9/11 attack. So the capital was not coming, the capital के inflow में problem है, plus it was witnessing to successive drought, and 97-98 was also the period of not mentioned here, but it was also the period of East Asian financial crisis. तो East Asian financial crisis का phase भी है वो. तो because of those factors the outcome basically जो था वो growth का मतलब reform was there, but its outcome was not realized because of these changes or because of these shocks. और उस कंटेक्स्ट में याद रखिएगा जब आप इस फेज़ को बेसिकली कंप्लीट करते हैं तो बेसिकली ये फेज़ इन टर्म्स ऑफ द रिफॉर्म इट वाज गुड, बट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ परफॉर्मेंस, बिकॉज हर पीरियड को जब आप एक्सप्लेन करें इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ पीरियड इट वाज नॉट वेल, एंड दैट वाज रिफ्लेक्टेड इन दिस स्लो डाउन इन द ग्रोथ बिटवीन 98 ऑनवर्ड्स. और ऐसे जैसे आपने यहाँ लिखा ना 2 कंजिक्यूटिव ड्राउट पीरियड भी है. जितने भी रिफॉर्म के फेज़ लिखे आपने इस फेज़ में उसमें हमने कौन कौन से फैक्टर हाईलाइट किया? टेलीकम्युनिकेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग. वी हैव नॉट एड्रेस एग्रीकल्चर. ठीक है, रिफॉर्म 91 वाले में भी नहीं है, 98 वाले में भी नहीं है. दैट नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेड टू द रूरल डिस्ट्रेस. और जो 2 कंजिक्यूटिव ड्राउट हो गया 2000 और 2002 के बीच, उससे वो डिस्ट्रेस और बढ़ गया. एंड द मेजर रीज़न फॉर NDA 1 voted out of power was basically that rural distress. The BJP went with India Shining campaign, but it was shining for the urban area, not for the rural area. तो जो रूरल एरिया है उस रूरल एरिया में उसे वोट नहीं मिला. तो जो रूरल पार्ट है मतलब मतलब जब आप इकोनॉमिक इवेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो ऑब्वियसली उसके पीछे उसके पैरेलल बेसिकली आपको एक आउटकम मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द चेंज इन द गवर्नमेंट एज वेल. सो दैट इन दैट केस द गवर्नमेंट चेंज इन 2004 से, लेकिन 2009 का जो फेज़ है जिसको सर्वे के अंदर भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये फेज़ बेसिकली हो गया 2003 to 2008-09. दैट वाज द फेज़ ऑफ ग्लोबल boom. So India also benefited from that boom, but that was the phase of good growth, widespread growth, and that also was the reason for UPA 1 get re-elected in 2009. मतलब ग्रोथ के पैरेलल बेसिकली एक लिंक होगा चेंज इन द गवर्नमेंट के साथ भी. सो अप टू दिस वाज द पीरियड फॉर 2002-03. नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग फॉर द पीरियड 2003 to 2008. We are considering or focusing on the period 2003 to 2008. The period of global boom. But it also correct that the reform, जिस रिफॉर्म का बेनिफिट 1998 to 2002-03 नहीं मिला, partly the credit of this growth also goes to that reform. Reform was not resulted into the growth because of the external factors, but that same reform benefited the economy later on. Next paragraph में the growth dividend from the reform, the growth dividend from the reform, the growth dividend from the reform of 1998 to 2002, the growth dividend from the reform of 1998 to 2002 were realized
after the shock disappeared, so the years of structural reform, had prepared the Indian economy. The years of structural reform had prepared the Indian economy to contribute to global growth and also benefit from it. So India contributed to the global growth and also benefited from that global growth. So while the global growth averaged 4.8%, during 2003 to 2008, the Indian economy achieved a growth. Indian economy achieved a growth of 8% on average. Growth of 8% on average. 8% on average. This high growth rate was supported by strong capital inflow, which indicated favorable domestic and external factors. Some of these included sustained momentum in domestic economic activity, better corporate governance, after conducive investment climate, positive sentiment for India as preferred investment destination. Positive sentiment for India as preferred investment destination and encouraging global liquidity condition. So the growth was basically supported by, or we can say it has been financed by more and more strong capital inflow. So a lot of investment was coming during that period, and that investment was the reason for high growth rate during the period of 2003 to 2008. But again 2008-9 we find what? Financial crisis again, okay, in the US, and that will have the spillover effect for the world economy. So after that period basically उस phase को यहाँ पे explain अब नहीं किया जा रहा सर्वे में, and that was the phase of 2009 to 2014. It straight away now jumps to the current phase 2014 onwards.
ठीक है, तो उस फेज को बेसिकली नहीं कि, बट जस्ट कीप इन माइंड दैट फेज वाज मतलब 2008-9 ऑनवर्ड्स देयर वाज फर्दर वी कैन फाइंड अ स्लो ग्रोथ रेट. ग्रोथ की जो स्टोरी है बेसिकली वही है. 2003 to 2008-9 तक वी फाइंड अ हाई ग्रोथ रेट, बट अगेन 2008-9 वी फाइंड अ लोअर ग्रोथ रेट. ठीक है, सो दैट लोअर ग्रोथ रेट वाज मेनली बिकॉज ऑफ दैट फाइनेंशियल क्राइसिस, प्लस जो ग्रोथ बेसिकली 2003 to 2008 का फेज है दैट वाज आल्सो टू सम एक्सटेंट नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज उस पीरियड में जो ग्रोथ हुआ वो क्रेडिट के ग्रोथ की वजह से भी ज़्यादा है. और जो क्रेडिट का ग्रोथ है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन बैंक्स वर गिविंग क्रेडिट, तो क्रेडिट के दैट बेसिकली ऑल्सो रिजल्टेड लेटर इनटू द हाई एनपीएस ऑल्सो, बिकॉज जब हम ग्रोथ को एक्सप्लेन करेंगे द ग्रोथ रिक्वायर सम फाइनेंसिंग. So growth, that means if there is more and more growth, so growth needs some capital. So one source of capital was the foreign, the other source was basically coming internally when banks were lending to the firms. But अगर हमने उसको risk का assessment properly अगर नहीं किया, then it will result into the loss in the future. It was not sustainable. So that momentum was lost in the period of 2008-9 onwards. So just you can add one paragraph, although not written in survey, just add. During the period 2008-9 to 2000, during the period of 2008-9 to 2013-14, 2013-14, there was a loss in growth momentum. There was loss in growth momentum. There was loss in growth momentum mainly because of US financial crisis, which spilled over to most of the emerging markets, which spilled over to most of the emerging markets. In addition, the financial crisis also exposed weaknesses in the Indian banking system. In the form of rising NPA. ठीक है, now we can explain this phase, the present phase you can say. Basically it is for this last 7 or 8 years, और लास्ट डेकेड का क्वेश्चन आता है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. पर जो प्रेजेंट फेज है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग क्रिटिकल ईयर हो जाएंगे. इसमें 2014 ऑनवर्ड्स पे अगर आप लेते हैं तो उसके अलग अलग क्रिटिकल ईयर हो जाएंगे आप. दैट मीन्स 2014 ऑनवर्ड्स का फेज भी अगर लेते हो, 2016 वाज द पीरियड ऑफ डीमोनेटाइजेशन, फिर 2020 विल बी द पीरियड ऑफ कोविड. तो डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ demonetization, after that 17 was the introduction of GST. So those are basically called as the disruptive policy changes. So those disruption basically caused slowing down of the economy. So slowing down of the economy went well before COVID. तो
तो वो आपने पहले भी कर रखा है और जो डेटा लास्ट क्लास में लिखा था वो भी सपोर्ट करा है कि 18-19 के अंदर भी ग्रोथ कम था. दैट मीन्स इकॉनमी वाज ऑलरेडी स्लोइंग डाउन. कोविड-19 बेसिकली हेल्प्ड further downward. So that growth was basically declining, but why it was declining earlier? It was declining mainly because of some disruptive policy changes. So that period has to be explained here. ये स्ट्रक्चर आप पहले ड्रॉ कर लेंगे, दैट विल बी बेटर बिकॉज दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड. अंडरलाइंग द फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म फॉर अ न्यू इंडिया. जस्ट मेक दिस हेडिंग. अंडरलाइंग फ्रेमवर्क फॉर रिफॉर्म्स फॉर अ न्यू इंडिया. Underlying framework for reforms of New India. The purpose of enhancing the productive potential of economy and its people and efficient resource allocation, and those two things will be helping to achieve what? Ease of doing business and ease of living. But to promote that ease of doing business and ease of living, 4 points has been explained. Creating public good, trust based government, governance, agriculture productivity and private sector participation. अकॉर्डिंगली जो डिस्क्रिप्शन है उसके भी 4 डिफरेंट पार्ट्स होंगे. इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक गुड, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. Any question related to the recent phase or recent reform, you can use it. Write down. The reforms undertaken before 2014. The reforms undertaken before 2014. The reforms undertaken before 2014 primarily catered to product and capital market space, or primarily addressed to product and capital market. Primarily addressed to product and capital market. Full stop. They were necessary and continued post 2014 as well. They were necessary and continued post 2014 as well. However, the government imparted a new dimension. To these reforms. Government imparted a new dimension to these reforms. In the recent years.
with an underlying focus on or emphasis on, with an underlying focus on enhancing the ease of living and doing business, with an underlying emphasis on enhancing the ease of living and doing business, and improving economic efficiency, and improving economic efficiency. Full stop. These reforms are expected to lift the economy's potential growth. These reforms are expected to lift the economy's potential growth. Lift the economy's potential growth. Next paragraph. The broad principles behind the reform were point wise कर लेना सर. Behind the reform were: A, creating public goods, B, adopting trust-based governance, Sir, adopting trust-based governance was second point होगा या first? फर्स्ट इज बेसिकली फॉर जो प्रिंसिपल लिख रहे हैं उसमें आप क्या लिखे हो? क्रिएटिंग पब्लिक गुड इज वन, सेकेंड अडॉप्टिंग ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, थर्ड co-partnering with the private sector, for development, co-partnering with private sector for development. जब आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी प्रोग्राम के बाद एक्सप्लेन करते हैं वो बेसिकली co-partnering with the private sector. And fourth, improving agricultural productivity. Improving agricultural productivity. Next paragraph. This approach reflects a significant shift in growth, a significant shift in the growth and development strategy of government. Significant shift in the growth and development strategy of government. Growth and development strategy of government. After comma, with the emphasis shifted towards building partnership among various stakeholders, in the development process. After comma, where each contributes to and reaps the benefit of development. Where each contributes to and reaps or gets the benefit of development. Each contributes to and reaps the benefit of development. So each is contributing to the development and each one is also benefited from that development. In that context you use the word सबका साथ सबका विकास.
अब when we explain like the inclusive growth, तो जब आप inclusive growth word use करते हैं इसका मतलब क्या है? If the focus shifted from to inclusive growth, it means what? The growth process is bypassing certain section, so all section are not benefited. उस context में ही तो हम inclusive growth को explain करते हैं. So this is basically the government version. ठीक है, यहाँ तो basically आप ये explain कर रहे हैं. So when we explain the other dimension, तो जो recent phase होगा उसके अंदर जो major points है basically वो यहाँ पे highlight हो जा रहा है. Like जो current challenges अगर economy के अंदर explain करते हैं तो current challenges like unemployment problem, current challenges like rising inflation, current challenges like lowering of the growth, overall the long term growth rate. So those are the overall challenges, but to meet those challenges the government approaches this basically. So this is basically from the policy point of view, what policy measures has been taken or are being taken currently. तो ये पॉइंट बेसिकली आपने लिख रखा है, इसको आप सेपरेटली इफ यू वांट टू इलेबोरेट इट फर्दर देन जो 4 पॉइंट्स है उनका इलेबोरेशन है. तो आउट ऑफ दोज 4 पॉइंट्स बेसिकली 1 पॉइंट इज व्हाट? क्रिएटिंग पब्लिक गुड, देन ट्रस्ट बेस्ड, देन प्राइवेट सेक्टर एंड देन एग्रीकल्चर, और ये अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन हो रहा है. सो लाइक क्रिएटिंग पब्लिक गुड टू एनहांस अपॉर्चुनिटीज, एफिशिएंसी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो यू कैन जस्ट हेडिंग नहीं डालना है, हेडिंग आपने 4 वो मार्क कर रखा है. जस्ट रिमेंबर जो आप नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं वो उसका इलेबोरेशन है नेक्स्ट पार्ट में. द लॉन्च ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इन 2000, द लॉन्च ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट इन 2000 was the beginning of infrastructure intensive policy making in India. Was the beginning of infrastructure intensive policy making in India. Infrastructure intensive policy making in India. So a quantum leap in policy commitment, a quantum leap in policy commitment and outlay for infrastructure, a quantum leap in policy commitment and outlay for infrastructure is now visible in the last few years. In the last few years, it has been highlighted by significant growth in government's capital expenditure. Significant growth in government capital expenditure. Significant growth in government capital expenditure as a percentage of GDP. As a percentage of GDP. As a percentage of GDP. Significant growth in government's capital expenditure as a percentage of GDP. ठीक है, कैपेक्स जैसे करंट फेज में ये 14 to 2022 it was around 1.8%. And from 1.8 to 3 so almost doubled in terms of the percentage also. Absolute number में तो ग्रोथ ज़्यादा है, बट जो परसेंटेज है उस कंटेक्स्ट में भी अमाउंट डबल है. In doing so, the government has laid a good platform for crowding in. Good platform for crowding in. Underline the word crowding in of private investment. Crowding in of private investment and growth in the coming decade. And growth in the coming decade.
The next paragraph में the dedicated program for road connectivity, the dedicated program for road connectivity, dedicated program for road connectivity, that is Bharatmala, comma port connectivity, Sagarmala. The dedicated program for road connectivity within bracket Bharatmala. The dedicated program for road connectivity, port connectivity, electrification, railway upgradation, and operationalizing new airports, have significantly improved physical infrastructure, So related to the creating more and more of public good, the schemes of Bharatmala, Sagarmala, electrification, upgradation of railway and operationalizing new airports. With the national infrastructure pipeline, NIP, with the national infrastructure pipeline in 2019 and national monetization pipeline in 2021, national infrastructure pipeline in 2019 and national monetization pipeline in 2021. After comma, a strong baseline for infrastructure creation, and development has been put in place, ठीक है. But apart from that physical infrastructure, in addition to that physical infrastructure, it also talks about the digital infrastructure. It is also has promoted there, तो वो भी उस कैटेगरी के अंदर आपको ऐड करना. तो these were programs of basically the physical infrastructure. Roads, ports are basically physical, and apart from that, you have government has also created the more and more digital infrastructure. So next part. In addition to physical infrastructure, the government emphasis on developing public digital infrastructure during the last few years has been a game changer in enhancing the economic potential of individual and business.
ठीक है, लाइक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ आधार एंड उससे रिलेटेड, तो वो अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स, यू नो दैट, जस्ट यू कैन इग्नोर दैट. Next, next part is basically for the vital contribution of that digital infrastructure has been the greater formalization of the economy. What is the meaning of formalization of economy? More and more transactions are basically reported because it is digital in nature. So if it is digital in the nature, then more transaction will get reported, therefore economy will become more and more formalized, and because of that also we find the tax buoyancy also, because it is formalized, formal sector होगा तो उसके correspondingly tax buoyancy will also be there. So the increase in, let us say, personal income tax share, increase in the corporate income tax share, overall डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, तो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ दैट इकोनॉमी. सो इट इज़ द फिजिकल और रादर द पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बेसिकली हेल्प्ड इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी. सो एट दैट पॉइंट नेक्स्ट पैराग्राफ में, अनदर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, another important contribution of digital infrastructure has been the greater formalization of economy, has been the greater formalization of economy, greater formalization of economy. Greater formalization of economy. This has helped in generating more tax revenue, in generating more tax revenue, in generating more tax revenue. Okay, now we can move to the second dimension, and that second dimension was trust-based governance. Briefly, you can conclude. Building trust between government and citizens and business, building trust between government and citizens and business improves efficiency through better investor sentiment, comma, better ease of doing business, better ease of doing business, and more effective governance, Full stop. In this direction, consistent reforms has been made. In this direction, consistent reforms have been made. Full stop. Simplification of a regulatory framework. Through reforms such as IBC, Insolvency Bankruptcy Code, reforms such as IBC and RERA, Real Estate Regulation and Development Act, and RERA have enhanced the ease of doing business,
have enhanced the ease of doing business. So IBC code and the ARERA has enhanced the ease of doing business. Another significant reform to enhance doing business has been decriminalization of minor economic offense. Decriminalization of minor economic offense under Companies Act of 2013. Decriminalization of minor economic offense under Companies Act of 2013. In particular, the taxation ecosystem in the country, has undergone substantial reform with the adoption of unified GST. In particular, the taxation ecosystem in the country has undergone substantial reform by adopting unified GST, reducing corporate tax rate, exemption of wealth fund and pension fund from tax, and removing the dividend distribution tax. These measures has reduced the tax burden on individual. And business. These reforms have reduced the tax burden on individual and business. ठीक, और इसका जो आउटकम है, इस आउटकम को बेसिकली शो किया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस द मंथली ग्रॉस GST कलेक्शन हैज़ बेसिकली गॉन अप. So monthly gross collection of GST is going up because of the certain reform changes. It is just further adding that it is this more reform is basically the GST collection is increasing because of the technology backed tax governance, from simplification tax process, enhancing compliance and improving the fraud detection system. The faceless assessment and appeal system no longer require a physical interface. That means you don't have to go to the department and submit. The interface is not personal. So that has basically reduced the tax hassle plus exploitation plus the element of corruption as well. So those points has been basically, but जब आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें जो मेजर फीचर है उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर देना. ये सेकंड पार्ट तक आ जाएगा. जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है उसमें वन पार्ट इज बेसिकली प्रमोटिंग दी private sector as a co-partner in the development, and the final is for agriculture. So this third one, next पे आप third dimension अभी और second last, promoting the private sector as co-partner in development.
in the recent year, in the recent year, in the recent year, there has been more engagement with private sector. There has been more engagement with private sector. There has been more engagement with private sector as a partner in the development process. As a partner in the development process. As a partner in the development process. The government's disinvestment policy has been revived. The government's disinvestment policy has been revived. The government's disinvestment policy has been revived. With privatization of many PSUs. With privatization of many PSUs like Air India. With privatization of many PSUs like Air India. Also, the new public sector enterprise policy, the new public sector enterprise policy for Atmanirbhar Bharat, the new public sector enterprise policy for Atmanirbhar Bharat has been introduced to realize higher efficiency gain by minimizing the presence of government. Has been introduced to realize the higher efficiency gain by minimizing the presence of government in PSUs. So significant initiative has been introduced. Significant initiatives has been introduced under Atmanirbhar Bharat and Make in India. Under Atmanirbhar Bharat and Make in India. Significant initiatives have been introduced under Atmanirbhar Bharat and Make in India to enhance manufacturing capability. And export. Enhance manufacturing capability and export across industries. Then it goes to detail of the FDI and what way it is basically coming. ठीक है, लास्टली इसको आप कंक्लूड कर लेंगे विथ बट जस्ट एक मेंशन सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, एनहांसिंग दी प्रोडक्टिविटी इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब फोर्थ डायमेंशन, बट नॉट मच इन डिटेल, जस्ट इट इज मेंशनिंग दैट इट इज बेसिकली, बट जो 3 फार्म लॉस थे वो विड्रॉ हो गए, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आप क्लेम इन द सेंस नहीं कह सकते दैट यू हैव पुश्ड बेसिकली इन द एग्रीकल्चर रिफॉर्म, बट इट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट फॉर दैट न्यू इंडिया. यू हैव टू एड्रेस इट, आज नहीं तो कल यू हैव टू बेसिकली एड्रेस दैट पार्ट. सो नॉट मच हैज़ बिन डन, बट जो फ्यू पॉइंट्स बेसिकली हैं उसके लिए बेसिकली कंबाइंड है. एंड देन इट बेसिकली कंप्लीट विद द ओवरऑल जो इट शॉक्स दैट इकॉनमी फेस ड्यूरिंग दिस पीरियड. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑब्वियसली वो डिफरेंट फॉर्म में, चाहे कोविड का पीरियड हो जाएगा, जीएसटी का फॉर्म हो जाएगा, और उससे पहले डिमोनेटाइजेशन के फॉर्म हो जाएंगे. उसके बाद इसने बेसिकली दोनों पीरियड को एक्चुअल में कंपेयर कर दिया. 98 और 2000 वहाँ भी शॉक है और इस पीरियड के अंदर भी है. मतलब जो ग्रोथ का एम है, मतलब जो अल्टीमेटली कोई भी रिफॉर्म पॉलिसी है उसका अल्टीमेट एम है टू सस्टेन मोर ग्रोथ. सो इफ़ यू आर एबल टू अचीव द हाई ग्रोथ रेट, then we can say that the reform has performed. If the reform is there but the outcome is not there,
That means the reform has basically underperformed in that way. So last fourth point में लिख लो. Agriculture sector in India has grown at an average annual growth of agriculture sector in India has grown at an average annual growth rate of 4.6% during the last 6 years. 4.6%. Agriculture sector in India has grown at an annual average growth rate of 4.6% during the last 6 years. This growth is partly attributable to good monsoon year, and partly to various reforms undertaken by government. रिफॉर्म्स या प्रोग्राम के लिए एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे वहाँ पे. सॉयल हेल्थ कार्ड, सच एज सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन फंड, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, promotion of farmer producer organization and national agriculture market, ENAM, national agriculture market. etc. All these measures are directed towards supporting the growth in agriculture. Productivity and sustaining its contribution to overall economic growth. In medium term. Sustaining its contribution to overall economic growth in the medium term. तो ये 4 डायमेंशन बेसिकली जो आप यहाँ के फॉर्म में एक्सप्लेन किया गया था, उसको रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म में अगर पूछा जाता है एनी क्वेश्चन, देन यू कैन यूज दैट ऑल 4 डायमेंशंस फॉर अचीविंग द एम ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द ईज ऑफ लिविंग. ठीक है, अब रिमेनिंग में जब फिर कंपेरिजन यू कैन स्किप दैट पार्ट, देन बिकॉज यू आर फेमिलियर विद दैट, कोई स्पेसिफिक या न्यू पॉइंट वहाँ पे नहीं है. और एक कंपेरिजन है ऑब्वियसली, उसका भी कोई ज़्यादा सेंस क्वेश्चन के एंगल से नहीं बनता, बिकॉज देयर इज नो सच क्वेश्चन लाइक कंपेयरिंग बिटवीन 2 डिफरेंट पार्ट्स. एंड यू कैन कंक्लूड विद दिस. ये आपका फ्यूचर आउटलुक है लास्ट में, प्रॉस्पेक्ट फॉर 2023 to 2030. So last 7 to 8 year and what we are looking for the next 7 to 8 year. So you can just mention that in conclusion. ये आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे आपसे अगर फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट पे के बारे में अगर पूछा जाता है, देन व्हाट आर द ग्रोथ मैग्नेट्स इन दिस डेकेड. सो इट इज़ फ्यूचरिस्टिक इन दैट वे, इट इज़ फ्यूचर आउटलुक है. इकोनॉमिक सर्वे किस सेंस में फ्यूचर को बेसिकली देख रहा है, इन व्हाट सेंस.
ये कंक्लूड बेसिकली कहता है दैट इंडियाज पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ कैन राइज टू 7 to 8% in the medium term. That means for the next few years we can achieve a growth rate of 7 to 8% in the real term. That is why we are optimistic that India will achieve a target of 6.5 in real GDP in the medium term. On an average basically it talks about that. But to achieve that part, what are the different growth? To India is prepared to grow at its potential once the one-off shock recedes. So one-off shock is basically that phase of pandemic related events. दो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है, डिमांड चेन का डिसरप्शन है, उस कंटेक्स्ट में बेसिकली आप इस पार्ट को रेफर कर सकते हैं. बट ये मतलब जस्ट एक वी कैन से ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम. तो इसको आप बस एक रीड कर लो या कुछ मेजर पॉइंट्स इफ यू वांट टू राइट जस्ट शॉर्ट में लिख लेना सर. अंडर द हेडिंग ग्रोथ मैग्नेट्स. After a long period of balance sheet repair in the financial and corporate sector, after the long period of balance sheet repair in the financial and corporate sector, the financial cycle is poised to turn upward. Financial cycle is poised to turn upward. So basically the statement is that after a long period of balance sheet repair in the financial and the corporate sector, the financial cycle is poised to turn upward. मतलब business cycle जैसे है वैसे financial cycle भी है. So repair of balance sheet basically means what? मतलब जो रियल इकॉनमी है वही फाइनेंशियल में शो होना चाहिए. बट अगर रियल और फाइनेंशियल में मिसमैच हो रहा है तो रियल और फाइनेंशियल में मिसमैच हो सकते हैं. रिसेंट आपके बहुत सारे इवेंट्स हो गए. अडानी का इवेंट बेसिकली वो इंडिकेट कर रहा है दैट इंडिकेशन इज व्हाट द रियल इज समथिंग सेपरेट, बट उसका जो फाइनेंशियल इमेज आ रहा है वो काफ़ी डिफरेंट आ रहा है. मे बी ट्रू, मे बी नॉट ट्रू, बट दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन. बट यू कैन से दैट द रियल इज different and its image in terms of financial is coming out to be overpriced. तो that is basically the need for self correction. तो जब हम बैलेंस शीट रिपेयर को एक्सप्लेन करें बेसिकली तो कॉर्पोरेट के अंदर भी है और वही चीज़ बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी है. दैट मीन्स जो रियल सिचुएशन है वो हमारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए. बट ये ना हो कि हमारा जो रियल परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट है बट बैलेंस शीट हमने मैनिपुलेट करके डिफरेंट रखा हुआ है. दैट मीन्स यू हैव बेसिकली शोन अ हायर प्राइसेस ऑफ योर शेयर टू गेट मोर एंड मोर डेट. तो जब वो प्राइस करेक्शन हो जाएगा तो डेट तो आपने अकोमुलेट कर लिया बाय शोइंग हायर प्राइसेस. प्राइस करेक्शन हो गया, अब डेट तो रीपे करना है. तो प्राइस करेक्शन इधर हो जाएगा बट डेट का बर्डन तो अपनी जगह बना रह जाएगा. तो दैट विल लीड टू द फाइनेंशियल क्राइसिस. सो योर बैलेंस शीट शुड नॉट बी दैट. तो उस कंटेक्स्ट में बेसिकली ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है. After a long period of balance sheet repair in the financial and corporate sector, India financial cycle is poised to turn upward. As the health and economic shock of pandemic, and the spike in commodity price of 2022 due to that Russian-Ukraine war, spike in the commodity price of 2022, wear off, after comma the Indian economy is well placed. The Indian economy is well placed to grow at its potential, in the coming decade. Indian economy is well placed to grow at its potential in the coming decade, similar to the growth experience of economy after 2003. Similar to the growth experience of economy after 2003.
full stop. This is the primary reason for expecting India's growth outlook. This is the primary reason for expecting India's growth outlook to be better than it was in the pre-pandemic year. Expecting India's growth outlook to be better than it was in the pre-pandemic year. Next paragraph में the digitalization reform and the resulting efficiency gain. The digitalization reform and the resulting efficiency gain in terms of greater formalization, higher financial inclusion, and more economic opportunities will be an important driver of India's economic growth in the medium term. And we can achieve a growth potential. We can achieve a growth potential of 7 to 8% growth per annum, in the medium term. 7 to 8% per annum in the medium term. So with that policy framework in place, we are expected to grow in future at the rate of 7 to 8%. So this chapter was not mainly dealing with we can say more with the fact. Data actual में कम है, but क्वेश्चन के एंगल से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वहाँ से बिगिन कर सकते हैं. 91 के बाद का जो रिफॉर्म है उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. सो दिस चैप्टर वाज मेनली यूज फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज़ नॉट कि हर चैप्टर के अंदर आपको उतना ही इलैबोरेशन या टाइम लगना है, बट सम चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट है. मतलब फॉर प्रीलिम्स के एंगल से ना भी इसको एक्सप्लेन करो तो विथ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, और फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर के लिए वो ज़्यादा यूजफुल है फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चन. इफ़ यू आर एबल टू यूज दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट और पैराग्राफ इन योर आंसर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, बिकॉज उसमें बहुत सारे पॉइंट्स बेसिकली एक सिंगल सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं. तो अगर इस तरीके के सेंटेंस आप लिख लेते हो वहाँ पे, बट यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट ओनली इफ़ यू विल राइट इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, इसको आपने बार बार अगर लिखा हुआ है, ओनली देन यू विल बी एबल टू राइट इट. सो वी हैव कंप्लीटेड बेसिकली चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. चैप्टर 2 बेसिकली इस ईयर के लिए आप कह सकते हो सर्वे में एक न्यू चैप्टर एडेड था. कन्वेंशनली इकोनॉमिक सर्वे के अंदर स्टेट ऑफ इकोनॉमी का एक चैप्टर होता है, उसी के अंदर होता है सारा. स्टेट चैप्टर 2 ऑनवर्ड से पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक बिगिन हो जाता है, बट दिस ईयर दिस चैप्टर 2 वाज वी कैन से एक्सक्लूसिवली एडेड. तो वो पॉइंट आपने डिटेल में कर लिया. अब इसके बाद के चैप्टर के अंदर पब्लिक फाइनेंस, फिर सेक्टर वाइज लाइक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, बट इट इज़ नॉट कि हर चैप्टर जितने चैप्टर है उतने लेक्चर लगने हैं. वी विल बी लिमिटिंग टू अराउंड 5 to 7 लेक्चर टू कंप्लीट द एंटायर. बट जो इंपॉर्टेंट है उसको आपको उतना इंपॉर्टेंस देना है. स्टेट ऑफ इकोनॉमी वाज बेटर चैप्टर, देन मीडियम टर्म ग्रोथ इज अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर. बाद वाले में क्या होता है, बहुत सारे आपको फैक्ट और डेटा एक्चुअल में मिलते जाएंगे. लाइक इस तरीके के पेजेस आते जाएंगे, तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होते हैं बट लिखने को या समझने को चीज़ें कम रहती है. ठीक है, सो विल कंटिन्यू विथ चैप्टर 3 प्रेफरेबली, या फिर सेक्टर वाइज अगर करते हैं तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस पहले कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू रहेगा.